women play an important role in the economy of Pakistan. According to the 2006 Pakistan Labour Force Survey, they make up only 19% of the total labour force in the country. But in reality, the number is much higher. The work that women do in the agriculture sector, on family farms, and in small industries remains invisible in official figures and reports. Millions of women in Pakistan support their families with their hard-earned income. Their mornings start with a daily routine of preparing food, cleaning up, getting the children ready. The responsibility to care for the entire family falls on the woman. But for this work, there's neither acknowledgement nor appreciation, and of course, no financial reward. Besides unpaid household work, women also do paid work, both inside and outside their homes. The range of paid work that women do is varied, but the difficulties they face are similar, and yet their spirit and resolve remain undefeated. मैं उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, बच्चों को देती हूँ, बच्चों को काम पे भेजती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को उठाती हूँ, फिर मैं जाती हूँ, 8 बजे निकलती हूँ, काम पे जाती हूँ। मैं यहाँ पे क्वालिटी केसी हूँ, मैं यहाँ 1 ईयर से काम कर रही हूँ। उधर झाड़ू है, पोछा है और बर्तन है, 1500 रुपया देती है। अकेली मैं काम तो कर लेती हूँ, पूरे डिपार्टमेंट बहुत कॉन्फिडेंस है अपने। हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, हम तो बता सकते हैं कि हमारे को इतनी मजदूरी मिलती है और इतना खर्चा हो जाता है, हमारे पास कुछ नहीं बचता। For the last 15 years in Karachi's Mahajir camp, Sughra has supported her family by sewing up small towels, the cloth for which she brings from the contractor's house nearby. Over the years, her daughters and daughter-in-law have joined her in this work. मेरा आदमी बीमार था, ब्लड प्रेशर ही हो जाता था, उसका शुगर था उसको, बच्चे छोटे छोटे थे, फिर मेरे को ये काम करना पड़ा। इसीलिए फिर मैंने ये महल्ले में लेके आए, ठेकेदार की इसने ये माल लेके आया, तो इसे उठाते थे, 20 रुपये सैकड़े का देते थे। हाँ, 20 रुपये सैकड़े, फिर 25 रुपये किया 1 साल के बाद, फिर 30 रुपये किया, फिर महंगाई, धागा बहुत महंगा होता है, फिर 35 रुपये किया। अभी हमारे को 35 रुपये दे रहे हैं, 3 साल पहले से 35 रुपये दे रहे हैं 100 का। दिन में हम लोग को भी घर का काम जो है ना, बच्चे चले जाते हैं, हम 4 जनी होती हैं, बहू भी होती है मेरे साथ, हम चारों मिल के ना 400 माल सी लेते हैं। According to the National Commission on the Status of Women, almost 75% of women working in the informal sector in Pakistan are home-based workers. Hanifa and her daughters stitch rice sacks at home. Hanifa has 6 children, 4 of whom are physically challenged. Her 2 mute daughters help her in this work. Lowly paid and working in extremely inadequate conditions, home-based women workers also have no legal protection or economic security. This is because the labor laws of Pakistan do not apply to home-based workers. बस जब भी रात के 6 बजे आ जाए तो हम सीने बैठ जाते हैं, 2 बजे आ जाए तो जब भी सीने बैठ जाते हैं, जब भी माल हमारे घर पे पहुँचे हम सीने बैठ जाते हैं। In a small, poorly lit room, 12-year-old Razia and her sister spend their day making incense sticks. For every 1,000 sticks that they make,
they get only 7 rupees and 50 paisas. The chemical used for the sticks, which their nimble fingers constantly touch, is extremely hazardous to their health. In a day, both sisters will make up to 3,000 to 4,000 sticks. After finishing with this work, both sisters count the sticks carefully before tying them up in bundles of 1,000. If the total sticks in any given bundle are even one less than the required sticks, the contractor deducts money from all of the bundles. In spite of years of doing the same work, home-based workers have no job security. If they ask the contractor or middleman for an increase in wages, the threatening response is that even the work which they are doing would be taken away from them. बोला तुम लोग को मर्जी काम करो नहीं करो, हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है, जहाँ से पैसा ज़्यादा मिलता है वहाँ करो तुम लोग। Ibrahim Haidari Goat is an old fishing village on the outskirts of Karachi. Deep-sea fishing by commercial trawlers, the use of harmful nets and polluted waters have negatively impacted on the livelihood of the fishing community. Traditionally, women here used to make fishing nets and repair them. But with the arrival of machine-made nets, they now have completely lost this means of earning. With increasing poverty, inflation and unemployment, women and young girls in this area depend on shrimp shelling to make ends meet. During high season, when there is work available, each woman may clean 3 to 4 buckets of shrimps. One bucket is usually filled up to 7 kilos of shrimps. Can you imagine what the rate is for cleaning one bucket? Only rupees 25. इनके जो सेहत का जो मसला है मैं समझती हूँ कि वो काफ़ी बड़ा मसला है। झींगे का जो पानी होता है एक तो वो लेसदार होता है, तो उससे जो जिल्द जो है वो ख़राब होती है। इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं रखी गई कि मतलब सिर्फ बड़ी उम्र की लड़कियां या औरतें उसको साफ़ करें। यहाँ पर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे भी जो हैं वो भी आपको झींगा साफ़ करते हुए नज़र आएंगे, और जो बच्चे होते हैं उनकी जिल्द तो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है और उन पर जो है इन चीज़ों के जो असरात हैं बहुत जल्दी होते हैं, और जिल्द इस तरह से इनकी ख़राब हो जाती है कि ऐसे लगता है कि जैसे जल गई हो, और नाखून जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, उंगलियां उनकी ख़राब हो जाती हैं, और जिस जगह पर बैठकर वो झींगा छिलते हैं वहाँ पर कोई ऐसी सफाई का इंतज़ाम नहीं है। झींगा जो है वो ज़मीन पर फेंक कर दे दिया जाता है, और उससे जो पानी है तो वो उनके नीचे जाता है, तो जिस्म के दूसरे जो हिस्से हैं उन पर भी उनका असर पड़ता है। खाई दी साथ बुध लहा था ची ते समझ साना चली दी नरम थी विंदा गर्वीन दी समझ सजी रात सूर कंदा और से जो कर दो हाँ वारी इन दी साना चल वारी नरम थी विंदा वारी 4-5 बाद ले वारी चले आले विंदी कौन करे इलाज। Besides working in the informal sector, a large number of women are employed in factories. The garment factories affiliated with international garment chains pay minimum wage to their workers. And some also have other facilities. सैलरी पे हम 4000 हमारी तनख्वाह होती है, संडे को छुट्टी होती है। ये ओवर टाइम जब करना होता है बहुत कम लगता है, ऐसे बस 2 घंटे 8 बजे तक। जब मैं यहाँ पर आई तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग 3000 रुपये दिए और उसके बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया। बच्चियाँ थी मेरी, बच्चे बहुत छोटे थे, बेटा छोटा सा था बिल्कुल। 7 बेटियाँ थीं, 1 बेटा था। तो बेटा और बेटी मेरा, जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो
1 महीने का बच्चा था, उसे छोड़कर मैं यहाँ पर काम करने लगी। लेकिन इन लोगों ने मुझे बहुत फैसिलिटीज़ दी, बहुत, यानी टाइम से पहले छोड़ दिया करते थे, मैं अपने घर चली जाती थी। Today, Samina's children go to school because she has a regular income. Sadly, such factories where work environment is appropriate are few. In most, working conditions are less than favorable, especially for women who have to face discrimination at all levels, including not getting equal pay as men for the same work, unpaid maternity leave, and lack of proper facilities. The Pakistan Factory Act and other laws do guarantee these rights to women workers, but the government's failure in monitoring their implementation leads to women losing out on their constitutional rights. अब कवानीन में इस तरह की मनफी तब्दीलियां भी हो गई, जैसे पिछले दिनों में ये फाइनेंस एक्ट के तहत फैक्ट्रीज एक्ट में तब्दीलियां की गई, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस में की गई, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट्स ऑर्डर में की गई। तो काम का दिन अब 12 घंटे हो सकता है कानूनी तौर पे। इसी तरह हफ्तावार छुट्टी जो है वो लाजमी नहीं रह गई है, और लोग जो ओवर टाइम करें तो ज़रूरी नहीं कि उनको ओवर टाइम मिले। उसमें ये कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जिसका डेजिग्नेशन है या जिसको पीस रेट पे पेमेंट होती है, उनको अब ओवर टाइम नहीं मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें रिवर्स हो गई हैं, तो जिसके लिए काफ़ी स्ट्रगल की थी वर्कर्स ने। Trade unions which can address these issues have been ineffective for a long time. And added to this is the non-participation of women in these unions. Hence, they are unable to collectively address their work problems. The growing influence of globalization has made its mark all over the world. One of its more negative aspects in the developing world is the increased number of factory workers employed as contract workers. In Pakistan too, the working conditions of contract workers is far worse than those employed as full-time. दिन पे कभी 50 कमाते हैं, कभी 100 कमाते हैं, कभी वो दिन आता है कभी कुछ भी नहीं कमाते, अपना किराया लगा के वापस चले जाते हैं। हमारे महीने बाद 15 दिन बाद पैसे मिलते हैं, पैसे नहीं हमारे को मिलते, बहुत बुखार होते हैं। तो कर्जा ले लेके दुकान वालों से राशन वगैरह लेते हैं कर्जा, फिर जैसे वहाँ से मिलते हैं ऐसे उनके दे देते हैं। हमारे तो ये हाल है बेटा। One biggest obstacle for women who work outside their homes is the sexual harassment they face. Not just on the roads, but also at their workplace. Almost all face this problem, but unfortunately very few have the courage to raise their voices against this. The reason is that so far there has been no legislation on sexual harassment at the workplace. Seema was working at a garment factory until she got married. Now that she's not working there anymore, she speaks of the harassment she and others faced. उनसे मैंने कहा कि फिर मेरी सैलरी, चूँकि मैं आपके थ्रू आई थी, आप इनसे बोलें कि ये सैलरी बढ़ाएं, तो ये सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई आप इस तरह करें, इंशाल्लाह ताला आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो मैंने कहा ये इसके अलावा बहुत कुछ क्या है, उसको तो आप छोड़ें, उन साथ आने जाने से सैलरी का क्या ताल्लुक है, आपने मुझे काम के लिए अपॉइंट किया। कह रहे काम दोस्ती में क्या है, दोस्ती तो सबसे होती है भाई, आपकी लड़कियों से भी दोस्ती, ये समझें कि आपकी लड़कों से भी दोस्ती है। 16-17 साल से लेकर आप 20 साल की उम्र से बड़ी लड़की को वो नहीं रखते थे, और शादीशुदा को तो बिल्कुल भी नहीं रखते थे। सिस्टम जो है इसी तरह ख़राब है। अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे तो ये आपको कोई ना कोई रीज़न दे के निकाल देंगे, और या फिर आपकी सैलरी वगैरह जो है वो ज़ब्त कर ली जाएगी। जो क्रॉपिंग के लिए लड़कियां आती थी वो छोटी छोटी कम उम्र लड़कियां होती थी, ना समझ होती थी, उनको कोई समझ होती नहीं थी। जैसे ही काम ख़त्म हुआ तो ये लोग कहते थे कि आज ओवर टाइम लगेगा, आपने 1 घंटे रुकना है, आपने 2 घंटे रुकना है। और वो बेचारी छोटी छोटी बच्ची होती है, 16-17 साल 15 साल, वहाँ तो 11-11 साल की बच्चियाँ भी काम करती हैं। अब उनको क्या पता कि बाद में क्या होना है। हमारे वहाँ बहुत सारे वाक़यात भी हुए। All the citizens get affected by the mismanagement of public transport.
especially women who have to face a lot of problems. While on the road, they not only have to protect themselves from the hard stairs and speedy cars, but also have to deal with men sitting on the seats allotted for women. They have to constantly struggle for their space. Often there are accidents. हम तीन मिल के जाते हैं, स्टॉप पे खड़े होते हैं गाड़ी के लिए, कितनी देर तक गाड़ी के लिए खड़े होते हैं। तो कोई खाली मिल जाती है तो उसमें चढ़ते हैं, नहीं मिलती है तो फिर रुकना पड़ता है, फिर भाग भाग के हमको चढ़ना पड़ता है गाड़ी में। कितने 5-6 आदमी लटक रहे थे गेट के ऊपर, तो मैं उतरी तो है ना, आदमी है ना मेरे को ऐसे धक्का दिया, मतलब गाड़ी चली ना, तो मैं ऐसे, मेरे को जगह नहीं दे रहा था कि मैं निकलूं बाहर, तो मतलब इसके ख्याल से गाड़ी निकल जाएगी, भाग भाग के चला, ऊपर चढ़ा, मेरे को धक्का दे दिया, मैं ऐसे गिर गई। मैं गाड़ी के नीचे नहीं तो आ गई, इधर फुल पारी नहीं, इधर गाड़ी बीच में, मैं ऐसे लेट गई, जैसे मेरे को धक्का दिया, फिर मेरे को इधर लगा था, इधर लगा था। The Constitution of Pakistan guarantees women their rights, but in reality, these are far from being realized. And the distance between state institutions and the workers is growing. There are, however, organizations and individuals who are trying to bring about change at the local level. Bashira used to pick cotton in her village near Hyderabad, under the blazing sun, picking cotton for 6 to 7 hours a day and for extremely meager amount of only rupees 35 for every 40 kilos of cotton. Male pickers were paid more for the same amount of work. आधा भी नहीं मिलता मर्दों के हिसाब से, ऐसा हो कि भाई आधा होना चाहिए, वो भी नहीं था। तो ये चीज़ देखते हुए हमने ऐसा किया कि हमने उनसे बात की कि भाई आप जो है थोड़ा मुआवजा बढ़ा दें, क्योंकि जो टाइमिंग थी वो भी बहुत बड़ी थी। ये हुआ था कि सुबह 7 बजे से हम जाते थे और शाम को 3 बजे 2:30 बजे ये बज जाते थे। हालांकि टाइम जो रखा हुआ था उन लोगों ने वो 1 बजे का था, लेकिन इस तरह होता नहीं था। तो फिर हुआ कि 2-4 जो थी मेरे साथ ख़वातीन थी, उसने कहा कि भी हम आपका साथ देंगे। और वैसे तो कहती तो सब थी, लेकिन जब टाइम होता था निकलने का तो सब पीछे हट जाती थी और कहती थी कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब लोग हैं, हम किस तरह जो है अपना पेट पालेंगे। ज़ाहिर बात है मैं तो चुप नहीं रह सकती थी। जब भी थोड़ा बहुत पता चलता कि हमारा को क्या है, ये मुआवजे की जो बात हो रही, फिर मैंने इस जो है जदोजहद को आगे चलाया। तो नतीजे में ये हुआ कि वहीं से खेतों से मुझे निकाला गया कि भाई आप जो है आप बगावत करती हैं और दूसरी ख़वातीन को भी जो है आप अपने साथ लेकर जाती हैं, तो इसीलिए आप ना आया करो। Even though she was not fully successful in her endeavour, Bashira continues to work for women and girls in her community. हमने जो है अपना वो काम शुरू किया, एक तंजीम बनाई प्रिय के नाम से। एजुकेशन के हवाले से हमने असरा से एक स्कूल लिया, वो बच्चियां पढ़ रही हैं, और एक प्रोजेक्ट लिया था SPO से तंजीम के थ्रू हॉस्पिटल का, क्योंकि हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। वो उनका कमदार था और खुद धनी आता था ज़मींदार, तो बहुत गालियां बकता था, काम नहीं करते, कितनी भी धूप हो कैसे भी हो, छोटे मोटे ये जो सब औरतें खड़ी है सब मने दिन रात मने काम में लगी रहती थी, कैसी भी धूप हो पर हो बनी के अंदर, घरों में नहीं आना, वो उन्होंने कानून निकाला, घर में कभी भी नहीं आना, घर पे नहीं आना, ऐसे हमारी बनी थी, ये बनी ऐसे, पर वहाँ से उठ के हम ऐसे घर पे नहीं आ सकते थे। वो उनका कमदार है, वो लाठी लेके खड़ा था, बस घरों में नहीं आने देते थे, भाई उधर ज़मीन पे रहो, उधर ज़मीन में रहो, उधर काम करो, उधर सारा दिन हमारे हाथ में रंबा था, सारा दिन हम उधर बनी में काम कर करके उधर ही सो जाते। नहीं ऐसा भी सब कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं बताया, बस उसने पछाड़ी में जो है ना कुछ नहीं बताया, बस ऐसे ही बता दिया तुम अगर 10 लाख रुपये हो गए, 8 लाख हो गए, ला के दो फिर जाओ तुम। अब 10 लाख 8 लाख कहाँ से लाए हम, कहाँ से हमें मिलते हैं।
Forced labour is a crime by the law of Pakistan. Yet, there are large numbers of agricultural and brick kiln workers who are victims of forced labour. And the worst victims of this oppression are women and children. Navvo has spent many years of her life in forced labour. Today, she, along with other human rights organizations, is helping to free workers of bondage. तो 3 दिन में उधर थी, मैंने सारा मसला देखा, इनों की मैं क्या हालत देखूं, बच्चों की क्या हालत देखूं, औरतों की क्या हालत देखूं। तो फिर इन्होंने मेरे को पूछा तो खाला क्या करना पड़ेगा, तो मैंने एक रास्ता बताया कि बेटा एक रास्ता आपके लिए अच्छा है। कैसी सूरत में मैं 2 गाड़ियाँ भेजती हूँ, गाड़ियों में आपके बच्चे वगैरह लेकर हमारे पास आप पहुँचो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कितना बड़ा ज़मींदार हो। सारा ये बैठा था, मेरे साथ बैठा था, ये सारे हारी थे। ये सलाह सुली करके मैं 3 दिन के बाद मैं वापस चली आई। तीसरे दिन मैंने गाड़ियाँ भेजी, रात को 3 बजे का टाइम था, ये बंदा जाके गाड़ियों ने उठाया। सुबह इधर 6 बजे पहुँचे थे, 3 बजे गाड़ी में बैठा और 6 बजे इधर ऐसी गाड़ी तेज़ चलाई कि 6 बजे ये बंदा सारा मेरे इधर पहुँची आया। सारे ये 82 लोग, छोटे बड़े 82 लोग। Navvo, Sughra, Hanifa, Lakshmi, Bashira, and millions of women like them are working to better their lives in an environment where women in general and women workers in particular are discriminated against. For their hopes to be realized, it is essential that the government enacts and implements laws that provide a conducive environment for women workers.